Good afternoon, dear learners. Welcome in the second live webinar of our Industrial Pharmacy First MOOC. So, I welcome you in this second live webinar. The reason behind organizing this or hosting this webinar, as you all know, B Pharmacy course or pharmacy course is quite a technical and professional course which requires continuous engagement with the learning material or teaching material and the practicals, and it is quite possible to get confused about few things now and then, and sometimes we unable to find answers on our own. So in this course we provide you the expertise uh, with our esteemed course coordinator, Dr. Ajay Simulti, Dr. Mona Simulti, and sometimes from the industry people also. So, in this live webinar, we will be focusing on your queries regarding the previous 6 week content, and we will be answering all your queries regarding that. So what you have to do, just go to the chat box and share your queries there, and we will try to answer all your queries one by one and according to the convenience. And now I would like to welcome our course coordinator, Dr. Ajay Simalti sir. Welcome, sir, and I'm handing over the mic to you. So, and the formal announcement of the session. Thank you, Dr. Lokesh. Welcome, dear learners, in the second live interaction, second webinar of our course, Industrial Pharmacy. I'm very happy that in this cycle, now we have become the family of, in this cycle, particularly more than 3,500, more than 3,600 learners we are together. So, friends, as you know, the importance of industrial pharmacy subject. The first and last time you are going to read the basics of these topics which you are going to read here, which you are going to learn here. What do we expect from this course? What academics expect and academia expects, and what industrial expectations are. They may be a little bit different, but the basics are same. So basics we are going to learn for the very first time. And I'm very happy that we got a very huge response, specifically from the learners of our Maharashtra and Bangalore, specifically in the Karnataka and Andhra Pradesh, to be very specific. Okay, followed by our some North Indian states. Now, friends, dear learners, students, research scholars, and my dear faculty members, when we are going to give our time in teaching and learning industrial pharmacy subject, it is very much important that we study some steps. Number one, the basics must be clear. I always mention that whenever official definitions, official criteria are mentioned, they must be clarified. They must be learned verbatim. शब्दशः याद करना है जो आधिकारिक परिभाषाएं हैं, ऑफिशियल डेफिनेशंस हैं. For my learners, I have come up not only with the English textbook but also the Hindi textbook of the industrial pharmacy, the first and foremost publication of industrial pharmacy book in Hindi. हम हिंदी में भी आपके लेके आए जो हमारे नॉर्थ इंडिया में जो हिंदी भाषी राज्यों में हमारे जो छात्र छात्राएं और शिक्षक हैं जो उसके बारे में पढ़ना चाहते हैं, जो चीज लर्न करना चाहते हैं, क्योंकि हमें कंसेप्ट सीखना है. व्हेन वी आर गोइंग टू एंटर इनटू द इंडस्ट्री, हमें वो काम आना चाहिए. Sometimes, especially in the industry, maybe the delivery, the communication may not be in the first and foremost priority criteria. हमें काम वो आना चाहिए, हमें उसकी समझ होनी चाहिए. तो हमने सोचा कि क्यों ना उस चीज को हिंदी में लेके आया जाए जिससे हम बाकी चीजों को समझ पाए. बाकी हमारे जो छात्र छात्राएं हैं, इंडस्ट्री के लोग जो
फार्मेसी बैकग्राउंड से नहीं है लेकिन फार्मेसी में एंटर करते हैं, वो कैसे उसको समझ पाए, तो उसके लिए हम उनको हिंदी में भी लेके आए। मैंने लिंक आपके उसमें भी दी है, आप जाएं और यू कैन हैव योर कॉपी। कहने का मतलब है कि समझे, समझना जरूरी है कंसेप्ट। Specifically when you are writing, this is the very first time you are focusing on the pharmaceutics topic in that much detail after the dispensing pharmacy in the first or second semester में। डिस्पेंसिंग करने के, डिस्पेंसिंग में समझने के बाद आपने वहां वर्बेटम डेफिनेशन लर्न। नाउ इट इज द टाइम टू लर्न द थ्योरीज बिहाइंड दैट, द कांसेप्ट, द कैरेक्टराइजेशन। नो कैरेक्टराइजेशन की अगर हम बात करें, जैसे हम अपनी बुक में जब हम बात कर रहे थे कि आई ऑलवेज गो फॉर दिस आवर बुक for the quick review, or as well as quick review book and other industrial pharmacy, our textbook is there. So we have focused and highlighted the things which you must learn, and in our course itself we have also emphasized. First of all, when you have did step one, you have gone for the verbatim definition of official criteria or things, then the conceptual things related to that aspect. Say for example, I'm talking about the sustained release tablets. So what are the modified release dosage form? USP definition must be learned verbatim. वो definition verbatim आपको आनी चाहिए. Then the classifications, the verbatim definition as per the USP, wherever it is there. देखिए आज हम बात करने जा रहे हैं, जब हम उस कंसेप्ट की बात करें, कंसेप्ट के बाद उसको समझना, तीसरे स्टेप में जहां पर भी जो है ऑफिशियल क्राइटेरियाज अवेलेबल हैं कैरेक्टराइजेशन के, वो आपको याद होने चाहिए. इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर प्रिपरेशन फॉर द जीपैट. जब आप जीपैट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहीं के यहीं उसको फाइनल कर दीजिए. अक्सर जो जीपैट में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा जो डोमेन है, इट कम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, दिस पर्टिकुलर पेपर. Now what are the tablet coating defects? What are the tablet defects? You must know it is the tablet defect or tablet coating defects. These simple things come from the GPAT, come in the GPAT exam. How you can avoid a tablet defect or tablet coating defect? What may be the remedy for the particular kind of tablet defect? वो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरा स्प्रेइंग का रेट को मैं कंट्रोल करूं तो कौन सा डिफेक्ट जो है मेरा प्री रिमूव हो सकता है, प्री हीटिंग करूं तो कौन सा डिफेक्ट इंप्रूव हो या कैसे उसको अवॉइड कर सकता हूं. These kind of things comes in the GPAT exam. Now solubility criteria, when we are talking, what is the solubility criteria? Very soluble, slightly soluble, sparingly soluble. What is the criteria as per the USP or IP? वो आपको याद होना चाहिए एक. और अक्सर वाइवा में भी हम लोग इस चीज को कोट करते हैं, पूछते हैं, हमें वो आना चाहिए. नाउ देखिए, जो हमने थ्योरी का एस्पेक्ट क्लियर किया है, उसके अलावा इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट थोड़ा सा अलग होता है, जिसमें कुछ एम्फेसिस जो करने होते हैं उसकी हम बात करने होते हैं. तो जो करेक्टराइजेशन के पैरामीटर्स हैं, करेक्टराइजेशन में जो ऑफिशियल लिमिट्स हैं, लाइक डिसोल्यूशन हम कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्या आपको केवल डायग्राम भी पूछा जा सकता है. अभी रिसेंटली हमारा एग्जाम हुआ है जिसमें पूछा ही गया था, सिंपल आप डिसइंटीग्रेशन एपरेटस का जो है डायग्राम बना दीजिए विद ऑल दी स्पेसिफिकेशंस एज पर द आईपी, एज पर द यूएसपी डिसोल्यूशन टाइप 1 apparatus को बना दीजिए. Now this is a trick, like dissolution type 1 and type 2 apparatus are different in the USP and IP. Dissolution type 1 apparatus USP is basket, but type 1 in IP is pedal. These are the tricky things which are asked in GPAT. यही चीजें आपसे GPAT में पूछ जाती हैं. And what dissolution apparatus you will choose for a transdermal patch for dissolution, for studying the dissolution. Paddle over disc. Which type? That type you have must know. तो the specifications ये जो है हमें याद कर, देखिए कुछ चीजें तो याद करनी होंगी, यहाँ पर याद किए बिना काम नहीं चलने वाला, बेसिक. तो जहां तक रीसेंट जो हमने जो टॉपिक कवर किए, लाइक इमल्सन एंड सस्पेंशन की अगर मैं बात करूं, अगर मैं इमल्सन की बात करता हूं, मैं जस्ट आपको कुछ चीजें देखना चाहते थे. पिछले टैबलेट के बारे में हम तो पिछली इसमें भी हमने बात किया था. लाइक इमल्सन में अगर हम कहें जो स्पेसिफिकेशंस हैं, इमल्सन की वर्बैटम डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, हम लोगों को उसको जरूर याद करें. देन व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इमल्सन्स में आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया सिंपल, ये आपने डिस्पेंसिंग में भी पढ़ा.
you must know how you can identify which type of emulsion it is. Now, what are the tests? Dilution test, dye test, the cobalt chloride test, fluorescence test, conductivity test. Apart from that, when you go for the formulation के पर्सपेक्ट में Oswald ripening, cracking, Colson's, and what is the rate of sedimentation? Stokes law. It is asked. Oswald ripening का phenomena. Then emulgent. देखिए HLB वैल्यू के बारे में जानना, क्या है HLB वैल्यू? हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस. तो जो इसका साइकिल है हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस का, उसके अनुसार हाउ यू कैन आइडेंटिफाई, अकॉर्डिंग टू दैट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई द इमल्जेंट्स. इमल्जेंट्स को कैसे हम सेलेक्ट करेंगे अपने फॉर्मुलेशन के लिए, अपने इमल्जन के बनाने के. सो एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट्स? देयर क्लासिफिकेशन नेचुरल, सेमी-सिंथेटिक और सिंथेटिक. You must know with suitable examples whenever required, and sometimes in some PG classes, the working percentage of using a particular polymer or a emulgent or a suspending agent is also asked. तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो अगर मैं ये इमल्जेंट यूज कर रहा हूं तो वो कितने परसेंटेज में इमल्जेंट का काम करता है. ओके, नाउ गोइंग फॉर द थ्योरी ऑफ इमल्सिफिकेशन. इमल्सिफिकेशन की क्या थ्योरी है ये आपको पता हो, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए. ड्राई गम, वेट गम मेथड से हम किस तरह से उसको बनाते हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए. एंड देन थोड़ा बहुत डेफिनेट, थोड़ा बहुत जानकारी माइक्रो इमल्शंस के बारे में और नैनो इमल्शंस के बारे में आपको हो, हालांकि इसकी डिटेल नहीं पूछी जाती है अंडरग्रेड के लेवल में. Now going for the suspension. Suspension में जो theory of suspension है DLBO theory. It is many time asked. Now what is the electrochemical theory? Nernst potential क्या है, zeta potential क्या है? What is the role of zeta potential in improving the stability of the suspension? Suspension की stability का zeta potential से क्या संबंध? Do we have the clarity? जी हाँ, वो पढ़ना. Now suspension की stability को maintain करना, degree of flocculation को study करना, and other correction methods. After that पेरेंटल वन, पेरेंटल में हमने पढ़ा कि जो है कितने रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है. आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनियस, आईपी, डिफरेंट रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में मैक्सिमम अमाउंट या वॉल्यूम हम जो इंजेक्टेबल्स का वो कितना डाल सकते हैं, कितना होना चाहिए. जो वर्किंग रेंज है यू मस्ट नो. नाउ आई हैव आस्क्ड यू दैट कैन आई डिलीवर डीएनएस 1 लीटर थ्रू द आईएम रूट. यू मस्ट हैव द क्लैरिटी. दस सर आईएम से हम नहीं दे सकते, ठीक है. So if you are talking पेरेंटल में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो सबसे ज्यादा बार जीपैट में भी पूछा जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट. आपने पढ़ा होगा पिछली वीक में. इन आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट क्या होता है? आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट नो हमारे यहाँ जो ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज जिसके हमने जिक्र किया, आपने पढ़ा होगा प्लस सिस्टम में. Osmotic pressure is a kind of colligative property. Now we have to control the osmotic pressure and it must be constant. जो freezing point depression जो प्लाज्मा का है -50 जो है, जो भी freezing point depression है -0.52 I think, as far as I remember, yeah, 0.52. तो 0.52 -0.52 डिग्री सेल्सियस. तो हमें जो भी चीज बनानी है पेरेंटल के फॉर्म में, जो इंजेक्ट करनी है, इट मस्ट अचीव द आइसोटोनिसिटी, यानी उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ही होना चाहिए जितना हमारे प्लाज्मा का है. तो दैट्स व्हाई whenever we are adding some isotonicity adjustment like sodium chloride हम डाल रहे हैं, डेक्सट्रोज डाल रहे हैं, तो what are the methods? यानी अगर किसी थर्ड एजेंट को मैं डालूं, अगर उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन सेम है एज दैट ऑफ किसके? प्लाज्मा के, तो वो आइसोटोनिक हो जाए. गॉट माय पॉइंट? तो आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट के जो मेथड है लाइक फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, देखिए इसमें क्लास 1 और क्लास 2 मेथड्स हैं. क्लास 1 मेथड में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्लास 2 मेथड में व्हाइट विंसेंट मेथड है. फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मेथड के लिए सिंपल सा हमने फार्मूला दिया है, द वेट परसेंट इज इक्वल टू 0.52 माइनस a upon b, where a is the freezing point depression of 1% unadjusted substance और freezing point depression of 1% adjusting substance. इनको यूज करना आना, और ये जीपैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ये छोटे छोटे जो फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो जीपैट में आते हैं, इनको कर डालिए. It will be very easy and it will be very, you will feel yourself very comfortable when you are planning for your GPAT exam. भाई GPAT पता है क्या होता है?
GPAT इज योर एंट्री गेट फॉर योर एम फॉर्म विद फेलोशिप। एक बहुत अच्छी फेलोशिप हमें मिलती है पीजी के दौरान, और जिनका GPAT स्कोर होता है उनको एंट्रेंस भी नहीं देना पड़ता अधिकांश संस्थानों में, एक्सेप्ट नाइपर। नाइपर का अपना एंट्रेंस होता है, नाइपर GPAT के बावजूद भी अपना एंट्रेंस करवाता है। अदरवाइज सारे संस्थानों में एम फार्मा करने हेतु यू डोंट रिक्वायर एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम। इफ यू हैव क्लियर द GPAT, वंडरफुल। GPAT का स्कोर आपको अच्छा लाना है तो यहाँ से तैयारी अभी से शुरू करनी होगी। फॉर सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड है, उसका फॉर्मूला आपको पता हो। एंड पेरेंटल्स के प्रिपरेशन के टाइप्स जो हैं, उसके अलावा उनके जो करेक्टराइजेशन के पार्ट है, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट कि हम स्टरलाइजेशन कैसे कर रहे हैं। प्लांट लेआउट एंड पेरेंटल्स की हमने बात करी है कि भाई किस तरह से प्लांट लेआउट एंड पेरेंटल की हम बात करने जा रहे हैं। तो ये भी जो भी हम बात कर रहे हैं, पायरोजेनिसिटी की हम बात करने वाले, वो आपको पता हो कि पायरोजन होता क्या है, कैसे हम पायरोजेनिसिटी को कम करें। ये कम नहीं करना है, कंप्लीट रिमूवल है। स्टरलाइजेशन मीन एब्सोल्यूट टर्म है। एफ वैल्यू क्या है, जेड वैल्यू क्या है, डी वैल्यू क्या है, यू मस्ट नो वर्बैटम डेफिनेशन। These simple things come in the GPAT exam, and it is very much important with respect to your GPAT preparation. So what are the most probable questions अगर हम कहेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में? पेरेंटल में कहें सबसे पहले आइसोटोनिसिटी एडजस्टमेंट, क्या आइसोटोनिसिटी है, उसके एडजस्टमेंट के मेथड की बात करें। करेक्टराइजेशन ऑफ पेरेंटल्स, लीकर टेस्ट की अगर हम बात करें, क्या लीकर टेस्ट है। स्टरलाइजेशन के मेथड्स की बात करें, व्हाट आर द डी वैल्यू, जेड वैल्यू, एफ वैल्यू, इनकी बात करें। तो यू मस्ट नो ऑन प्रायोरिटी। देखिए जब हम पेपर की तैयारी करते हैं तो हमको स्पेसिफिक होना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करना है। तो कौन से क्वेश्चन को फोकस करना है, कौन सी एस्पेक्ट को फोकस करना है, वो बहुत जरूरी है एकेडमिया के पर्पज से, GPAT के प्रिपरेशन के पर्पज। तो ये बात हुई एकेडमिक। देखिए मेरे को जो है क्वेरीज, कई लोग जो है क्वेरीज के मामले में झिझक रहे हैं। झिझकिए ना, डोंट हेजिटेट, आवर टीम इज ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। हमारी टीम आपको हेल्प कर रही है। जब भी आपकी कोई क्वेरी हो, यू कम ओवर देयर इन द आस्क क्वेश्चन टैब, अपना क्वेश्चन पूछिए, यू विल गेट योर आंसर इन द डिस्कशन फोरम। डिस्कशन फोरम हमने उसको नाम दिया है, जिसमें जो है आस्क क्वेश्चन पे आप क्लिक करेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेरी वहीं के वहीं आप पूछ सकते हैं, एंड यू विल गेट योर आंसर फ्रॉम आवर टीम। इंडस्ट्री की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, दे आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द एकेडमी। They don't require to be you to be a parrot. आपकी कंसेप्ट क्लियर, what may be the binder, what may be the disintegrant। एक सेम पॉलीमर को मैं एज ए बाइंडर यूज करना चाह रहा हूँ, डिसइंटीग्रेट यूज करना, मेरी परसेंटेज कितनी होगी, आपकी एक समझ होनी चाहिए फिक्स। इफ आई एम डेवलपिंग डिसोल्यूशन, मैंने डिसोल्यूशन तैयार किया, डिसोल्यूशन का सेटअप किया। हालांकि अंडरग्रेड में आप डिसोल्यूशन मेथड को एस्टेब्लिश करना नहीं सीखते, बट यू नो व्हेन यू आर प्लानिंग द डिसोल्यूशन, जब हम बायोक्लिन स्टडी करने जा रहे हैं, या ये कहें कि एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं जेनरिक ड्रग से, जो अपनी जो एस्टेब्लिश ड्रग है उससे जो मेरी जो जेनरिक ड्रग है वो ड्रग कितना डिसोल्यूशन को मैच कर रही है, तो मैं एक डिसोल्यूशन का मेथड डेवलप करता हूँ। मोस्ट ऑफ आवर R&D इंडस्ट्री वी डू दिस काइंड ऑफ वर्क ओनली, वी मैच दिस डिसोल्यूशन। आपने डिसोल्यूशन प्रोफाइल बना लिया, बहुत अच्छा मैच हुआ, बट व्हाट dissolution media you have used? You have used acetonitrile. Now what is the cost of acetonitrile? Can an industry can an industry personnel, the authority, the administration would love it? Most probably no. Why? Because acetonitrile is a expensive solvent. If you can achieve bit less percentage of matching, if you are matching with acetonitrile 96% with that particular standard drug, or you can say that drug for which you are preparing the generic drug, आप कुछ कम भी बना लें, आप 85% या जो है 87%, 87% तक भी आए, विद इन दी स्कोप पे लाए, बट इफ यू आर प्रिपेयर्ड इट फॉर मेथड विद मेथनॉल और द लेस एक्सपेंसिव solvent, then it's better for the industry. So what we have to save? We have to save our solvents, the cost, time, then the things are workable or useful for the industry. So academic perspective is little bit different compared to the industry perspective.
जब हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, देखिए आप इंडस्ट्री में जॉब करना चाह रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए हम लोगों को कि हमें किस चीज पे फोकस करना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है, जब आप इंडस्ट्री में जाने की तैयारी कर रहे हैं, आपको डिजोल्यूशन की प्रोफाइल्स, बायोफार्मास्यूटिकल क्लासिकल सिस्टम में मैंने पिछली बार भी बताया, उसके बारे में अच्छी जानकारी चाहिए। बीसीएस एमिडॉन मॉडल पढ़ा है ना हमने, फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में हमने पढ़ा। तो प्री फॉर्मेशन में जब हम पढ़ रहे थे, तो ड्रग के क्लासिफिकेशन, मोस्ट ऑफ द पीजी स्टूडेंट्स दे आर at randomly choosing any of the drug for even for the model drug. We have to see the BCS classification of that particular drug, उसको हमें देखना पड़ेगा। ठीक, तो फ्रेंड्स ये बात हमने आपको कही, बताई कि भाई हमें इसको तैयारी करनी है। दैट्स व्हाई आई हैव कम लाइव फॉर यू एंड आई विल बी हैप्पी दैट यू विल गो थ्रू ऑल दी कंटेंट्स। जाइए क्विज को जो है टाइम टू टाइम अपना कवर कीजिए, क्विज को जो है अटेंड कीजिए, एंड देयर बाय ओनली यू विल बी एबल टू कवर द कोर्स एंड लर्न द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सब्जेक्ट। इसको आप पहली बार पढ़ रहे हैं, इसके बाद डिटेल में नहीं पढ़ने वाले। So please do remember to go through the basics of the subject, and the next week is going to be launched very soon. Most probably today itself we are going to launch the coming week, and hope you are enjoying the course, and we are getting very good feedback uh, about the teaching and learning, about the learning in the course. I welcome all of you to this course again, and hope you are enjoying the course. And this enjoyment is at most important, that learning must be a pleasant experience. With this thought, I conclude today's session. And any of your query, if they are remaining, will be addressed by our discussion forum moderators and our teaching assistants time to time. Thank you from my side. Lokesh. Thank you, sir. So there was no query regarding the content in this session. I think all the queries have been handled in a very well manner by our TA, Mr. Mukesh, and teammates. So that's all for today, and I am winding up this session officially. Thank you all for joining. Thank you, sir. Thank you for Thank sharing you. your Bye bye. input. Thank you, sir.